Hi, I am Shivani. I also did my schooling from APS. I must say it was really great studying there. All the teachers are really helpful and humble. Now, as I am in charge of my brother's study from home, I observed that even during this corona pandemic period, his studies are not affecting at all. Every concerned subject teacher is in direct contact with the parents. They post their YouTube videos of their concerned subjects. The effort put by teacher in teaching can be directly seen through those videos. Their way of online teaching and using visualizations helps the students to grab the concepts very easily. All the revision assessments and periodic assessments are also held online. The extracurricular activities, whether art and craft or dancing, are still going on without any effect from this pandemic. Computer lab work is also done. Various competitions like dancing, drawing, painting, poem recitation are also held from time to time. Even morning assembly is also held through the YouTube videos. Every month PTM is also held especially, even if we can contact the teachers at any time at any day. All the festivals, whether religious ones like Janmashtami or national festivals like Independence Day, are also celebrated with great enthusiasm. Recently, New Year was also celebrated. Children posted their videos. Some were dancing, some were playing, some were reciting poems. It was really fun for students. It's really appreciable what the school administration and teachers are doing so that everything goes on smoothly without affecting any part of students' life. Thank you and have a nice day. नमस्ते जी। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के दौरान जो हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भेजी गई भी टीचर्स के द्वारा, या फिर हमें जो भी मटेरियल वगैरह या एटसेट्रा हमें बच्चों को जो स्टडी करवाने के लिए सिलेबस वगैरह भेजा गया, सभी टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट और जो एफर्ट थे बहुत अच्छे रहे और टीचर्स ने हमें हर चीज़ में हेल्प की। और जैसे कि जो भी सेलिब्रेशन आए या फेस्टिवल्स आए उन सब में टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के द्वारा हमें प्रेजेंट्स करवाए और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें जैसे कि क्रिसमस पे ये और क्रिसमस पे और अर्थ डे पे, और उसके अलावा उन्होंने बच्चों को गार्डनिंग और फॉलो रूल्स और सेव एनवायरनमेंट और कोरोना वायरस से रिलेटेड भी बच्चों को उन्होंने एजुकेशन दी, शिक्षा दी और बच्चों को ये भी बताया कि बार बार हैंड वॉश करना चाहिए। और उन्हें अगर कोई भी हमें सिलेबस से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती थी तो सभी टीचर्स ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनदीप शर्मा है। मैं बात करना चाहता हूँ एपीएस के ऑनलाइन सिस्टम के बारे में। जब 23 मार्च को पूरा भारत बंद हुआ कोरोना की वजह से, तो और पेरेंट्स की तरह मुझे भी पहली चिंता यही हुई कि मेरे बच्चे का एजुकेशन सिस्टम अब कैसे चलेगा। लेकिन एपीएस टीम ने हमारी मुश्किल को समझा और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, सभी सब्जेक्ट टीचर हमसे कनेक्ट हो गए, होमवर्क ऑनलाइन आने लग गए और बच्चा भी हमारा ऑनलाइन होमवर्क भेजने लग गया। एक ऐसा माहौल बन गया घर में एजुकेशन का एपीएस की वजह से कि जिसमें सब इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने इसमें योगा क्लासेस करवाई, उन्होंने इसमें खेल की प्रतिभाओं को भी ऑनलाइन निखारा। उन्होंने योगदान दिया कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज में भी हिस्सा लें, तो उन्होंने एक्टिविटीज कंपटीशन भी करवाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ने एक्टिविटी में भी काफी पार्टिसिपेट किया और वो एजुकेशन में इम्प्रूव करने के साथ साथ एक्टिविटीज में भी इम्प्रूव करने लगी। जैसे योगा में उसने पार्टिसिपेट किया, उसने डांस क्लासेस में पार्टिसिपेट किया, उसने स्पीच में, ड्राइंग में, सब जगह पार्टिसिपेट किया। तो ये सब पॉसिबल हो पाया एपीएस टीम के अथक प्रयास से, जो ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और सभी पेरेंट्स और बच्चों के साथ कनेक्शन जोड़ पाए। इसमें इन्होंने इकोनॉमिकली भी काफी बेनिफिट दिया। जैसे पहले फीस इकट्ठी दी जाती थी, इन्होंने पर मंथ लेनी शुरू कर दी, जिससे पेरेंट्स को भी राहत मिली। तो मैं सारी एपीएस टीम को बधाई देना चाहता हूं उनके ऑनलाइन प्रयास के लिए और सभी टीचर्स बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। I, Mona Kamal, hereby humbly express my thanks for giving me an opportunity to express my views. I want you to know that, dear teachers, you are seen and you are valued. You may not be listed as essential workers, but you are essential. I appreciate all the work that goes into teaching under typical circumstances. Teaching during this
coronavirus pandemic is so far from typical. You are putting together distance learning plans. You are adapting your teaching in the blink of an eye. You are creating history. During online education, students are not missing anything. They are able to enjoy their music classes, they are able to enjoy their dance classes, they are able to enjoy their yoga classes, and they are able to enjoy their games classes too. This is amazing. Nothing is skipped. I am doing my best to support my child at home learning, but in no way I consider this homeschooling. I am supervising, but you, the teacher, are doing the heavy lifting. And last but not the least, teachers, parents can't replace you. You are essential. Thank you, and my salute for being there. Hello everyone. Today I am making this video to appreciate the efforts put by teachers and school management in time of this COVID pandemic. And I was worried regarding his studies, but Agarsen Public School has proved its ability. Teachers have given their best so that academic don't suffer, be it through regular classes, revision test, virtual PTMs, etc. Teachers were always available and also very open for parental feedback. Not only academic but also they focused on the overall development of the child by providing sports, music, dance videos. They also organized virtual functions on special days to bring out the creative side of the child. Really, hats off to their hard work. Thank you. Hello, I am Neeraj Mittal. I would like to convey my gratitude towards the teaching staff of the Agarsen Public School for taking care of our children education during the challenging time of the COVID pandemic. You all put in your best effort for teaching online, which was a unique experience for you as well as for the parents. In the end, once again, thank you all. Looking forward for the 21-22 academic session, which is, I think, would be a normal school classes for the children. Thank you. Namaskar, I am Meenu Chaudhary. From last March 2020, due to corona spread, online study will be started. I am totally satisfied with the online study from Agarsen Public School. They have completed all syllabus in YouTube classes, etc. They celebrated all events, culture program in the form of functions like festival online with painting, slogan, speech, dance, etc. They have done all 1-3 tests in Google form, written test. So I am totally satisfied. Thanks to all Agarsen Public School staff to cooperate with parents for study of children. Thank you. Warm greetings to everyone. I am Jay Tiwari. I have seen my kids through tough time of COVID-19 studying through the videos sent by Agarsen Public School. I have some experience I would like to share with you. I have deep sense of admiration and gratefulness for all the teachers of Agarsen Public School. The videos sent by them are well elaborative, explaining each and every topic coherently. So my kids are able to imbibe them easily and clearly. The teachers of Agarsen Public School are always ready to address any academic problem faced by my kids. I am deeply indebted to the team Agarsen Public School. This is a little
I could say about the Agrasen Public School. Thank you. Hello, myself Prabjit Kaur. First of all, I would like to thank all the school authorities who had put in their sincere efforts, all the teachers for the online teaching process in this pandemic. And the videos which were made by the teachers, they were very easy, simple, understandable by the kids. They could easily understand the concepts which were explained by the teachers. And every subject was covered in a very nice manner. Whatever the subjects they were teaching, like art and craft, or the subjects like drawing, also the sports activities were also carried out by the teachers. And many virtual celebrations were also conducted by the teachers during this pandemic year 2020, like Rakhi celebration, New Year celebration, then Christmas celebrations. So what happened is that the kids were very excited during these virtual celebrations also. They were involved in these celebrations, and they were excited to see their classmates also, how their classmates are performing during this virtual celebration. So in the end, I would like to express my sincere thanks, gratitude towards the authorities, towards the teachers who have put their sincere efforts to make this year a successful year for the students, as well as I am thankful to all the authorities. Thank you. Hello everyone, my name is Rekha. I'd like to share my experience about online classes during lockdown for teaching the students how to behave and how to handle this difficult time. They are trying to create same atmosphere as your classroom by giving them fun activities, tasks and organizing competitions. Also, their teachers notice small mistake and speak to correct the child again. Videos are as good as child can't take away their attention. The interaction between students, parents with teachers are superb. If I talk about without teachers' motivation, thank you teachers. Hello everyone, myself Nishu Ankit Gupta. I would like to say thank you to the respected principal ma'am, hard-working teachers and the whole APS team for providing the highest level of education to our children. I feel so lucky to have my daughter in Agrasen Public School. Thank you APS. Thank you so much. Good morning to all of you, respected principal ma'am, dedicated staff of the Agrasen Public School and dear parents. I would like to share my views regarding the online teaching process. जैसे कि हम सब जानते हैं, इस कोरोना की सिचुएशन में हमारी एजुकेशन सिचुएशन इतनी वर्स थी कि सभी कुछ हमारी लाइफ में डिस्टर्ब हो गया था। पर बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए भी और टीचर्स के लिए भी। पर टीचर्स ने इस टाइम में बच्चों को पूरा सपोर्ट किया है विद अ न्यू मेथड, जिसे हम ऑनलाइन टीचिंग कहते हैं। इस टीचिंग प्रोसेस से हम बिल्कुल ही अनजान थे, परंतु टीचर्स के एफर्ट्स ने इस अनजान मेथड को भी एक नया रास्ता दिखाया। बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, टाइमली उनका असेसमेंट लिया गया, टाइमली उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई गई, बच्चों को हर फेस्टिवल एंजॉय किया। टीचर के मोटिवेटेड जो लेक्चर्स थे, बच्चों की लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया उन लेक्चर्स ने। सभी टीचर्स ने टाइमली गाइड किया है बच्चों को इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में, हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए बच्चों को इस कोरोना सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन भी टीचर्स ने बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की है। टीचर्स ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया इस सिचुएशन में। इस सभी सिचुएशन में जो उन्होंने अपना सहयोग दिया है, उस सब के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और उनकी इसी तरह की सपोर्ट आगे के लिए अपने बच्चों के लिए हम चाहेंगे। थैंक यू। मैं अंशुमन मिश्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर हमारे सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जिससे कि पेरेंट्स को ये चिंता थी कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे संवारेगा। लेकिन भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार तथा स्कूल प्रबंधन व टीचरों
के अथक प्रयासों से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों की पढ़ाई शुरू की है वह अति सराहनीय कार्य है तथा मैं इसके लिए पूरे स्टाफ को, स्कूल प्रबंधन को, प्रिंसिपल मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे बच्चे के लिए इतना जो है मेहनत कर रही हैं तथा जो भी मटेरियल हमारा ऑनलाइन आता है टीचरों के द्वारा वो पूर्ण तरीके से सही है। धन्यवाद।